हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज के इस ट्रेडर जोन में और चार्ट स्पीक के सेशन में मैं आपके साथ मिलिंद उपासनी आपका स्वागत करता हूं। यहां पे आज हम देखने वाले हैं मेनली कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स, रिवर्सल स्टॉक्स और एक काफी लंबी लिस्ट है पैन स्टॉक्स की। तो इसलिए आज के सेशंस का नाम ही मैंने पैन स्टॉक स्पेशल रख दिया है। जिस भी किसी की स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, कृपया उसको एक स्टडी समझ के लीजिएगा, उसमें से सीखने की कोशिश करिएगा। इसे सीधे सीधे स्टॉक टिप समझ करके बिना समझे मार्केट में खरीदने या बेचने की कोशिश या एक्टिविटी मत करिएगा। तो आज की जो शुरुआत करता हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स के साथ। काफी पॉजिटिव दिन था और ब्रेकआउट्स आते हुए दिख रहे थे। ये स्टॉक है एरॉन, जो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक अटेम्प्ट हुआ था इस स्टॉक में इस लेवल पे ब्रेकआउट देने का, अराउंड 122-23 पे। तो अगर आप इसको ठीक से समझते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो यहाँ पे हुआ था वो काफी कुछ बीसीपी जैसा था, जिसको फेलियर आया है। वॉल्यूम्स भी नहीं था यहाँ पे, और आज इस पॉइंट से इसने रिवर्सल करके फिर से एक अच्छी सी मूव दे दी है। तो प्राइस एक्शन वाइज ये यहाँ पे लगता है कि ब्रेकआउट है, लेकिन इस ब्रेकआउट को मैं पूरी तरह से एश्योर्ड नहीं हूँ। दो रीजंस के कारण, क्योंकि यहाँ पे गैप है, इस जो लास्ट एफर्ट के पुश है उसमें यहाँ पे कुछ भी कैंडल्स का कलेक्शन यहाँ पे बना हुआ नहीं है नियर द रेजिस्टेंस। वॉल्यूम भी आपको दिखेगा उतना कुछ एक्साइटिंग या उतना कुछ हाई नहीं है जो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग मूव दे सके। फिर भी इसको एक ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि मेन रीजन जो है इसको ऑब्जर्व करने का वो है इसके फंडामेंटल्स। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि जब किसी भी स्टॉक में काम करे मोमेंटम के लिए, तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग देखिएगा। अगर ये 70% से ज्यादा हो तो दिस विल क्रिएट दैट डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस, जिसके कारण स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा आ सकता है। ये छोड़ के भी स्टॉक में अगर देखें तो फंडामेंटल्स काफी अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है, तो लो वॉल्यूम है, लेकिन पैरामीटर्स के ऊपर अगर मैं देखता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के, तो काफी स्ट्रांगली ये चल रहा है, ग्रोथ भी इन प्लेस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए फंडामेंटल्स में इसमें पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप ऐसे प्लेयर हो जो थोड़ी रिस्क ले सकते हैं और अच्छे से किसी स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं, तो इस स्टॉक को आप जरूर स्टडी करिएगा। स्टॉप लॉस मेरी तरफ से एज यूजुअल रहेगा लक्ष्मण रेखा, यानी 200 एमए। आप ठीक से देखेंगे तो इसी लाइन के इर्द गिर्द इसको रिवर्सल्स आते रहे हैं, और एक तरीके से रेजिस्टेंस लाइन और मूविंग एवरेजेस के बीच में ये स्टॉक स्क्वीज हुआ है। 2-3 दिन इसने 200 के नीचे क्लोज भी दिया है और वहां से रिवर्स करके आ रहा है। तो इफ यू आर अ पर्सन हु कैन ऑब्जर्व द स्टॉक एंड टेक एक्शन ऑन इट डिस्पैशनेटली, तो इसमें आप कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं स्टॉप लॉस 114 का रख के, जो कि करीब करीब 10% का बनता है। मैं खुद भी इसको ऑब्जर्व करूंगा एज अ स्टडी कि ये कैसा जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर बुलिशनेस कंटिन्यू होता है तो ऐसे रफ ब्रेकआउट्स भी चलना चालू कर देते हैं। दूसरा काफी स्ट्रांग और अच्छे वॉल्यूम का ब्रेकआउट जो आज देखा है हमने, वो आया है होंडा पावर में। इस ब्रेकआउट में मुझे मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो अच्छा लग रहा है वो है इन कैंडल्स का कलेक्शन बिफोर द ब्रेकआउट। और ओवरऑल आप देखेंगे तो ये एक कप और हैंडल सा भी स्ट्रक्चर दिख रहा है एक तरीके से। यहाँ पे तो इस लेवल पे ये प्रॉपर वीसीपी था, इस लेवल पे ये प्रॉपर वीसीपी है। वहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, रिवर्सल किया है, और रिवर्सल जोन के बाद प्रॉपर कंसोलिडेशंस हुए हैं। वहां से इस ब्रेकआउट लेवल्स के करीब आकर के इसने स्ट्रॉन्ग पुश दिया है। तो मार्केट की निगेटिविटी को इस स्टॉक ने अच्छे से झेला है पिछले 10-20 दिनों में, और एक स्ट्रॉन्ग मूव आज के दिन दी है। फंडामेंटल्स में भी अगर हम देखते हैं होंडा पावर को, तो आई एटलीस्ट फाइंड देम नॉट रिस्की। मेनली मार्जिन्स जो हैं आरओसी, वो आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड दैट आई जनरली एक्सपेक्ट, बट प्रमोटर होल्डिंग ऐसी है जो मोमेंटम को क्रिएट कर सकती है। प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग चल रही है। पी बाई अगर आप देखेंगे स्टॉक का है 22.8, और अगर इंडस्ट्री पी बाई देखते हैं तो वो 29 का है। तो ये सब को देखते हुए
होंडा पावर में आप नज़र रख सकते हैं, लेकिन इतनी दूर गैप अप के बाद जंप लेने के बाद खरीदना मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इंतजार करिए, इसमें कहीं पे कुछ ड्रॉप आता है, इनसाइड कैंडल्स बनते हैं, और अगर आज के ही दिन आपने इंट्राडे में इसको लिया हुआ है तो इट मेक्स सेंस टू होल्ड इट फर्दर विथ प्रॉपर स्टॉप लॉसेस। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस अगर आपको बताऊं तो स्ट्रक्चरली ब्रेकआउट की लेवल को ही मैं स्टॉप लॉस समझ करके चलूंगा। तो जहां से आज का ये गैप अप हुआ है, अगर बाय एनी चांस 1425 के नीचे यहाँ पे लो आता है तो ये नेगेटिव न्यूज़ होगी, लेकिन ओवरऑल ये जो स्टॉप लॉस ये भी काफ़ी डीप है। तो इस स्टॉक को आप मेरे ख्याल से छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फोमो जोन में आ गया है। अनलेस एंड अनटिल ये करेक्ट्स, रिवर्सेस बैक एंड देन टेक्स अ टर्न अप बिकॉज ऑफ दिस वॉल्यूम, क्वाइट पॉसिबल कि ये यहाँ से अगली मूव भी दे सकता है। देन देर आर सम रिवर्सल स्टॉक्स, तो इसमें से अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स ही मैं पिकअप कर रहा हूँ। गोदावरी पावर एंड स्टील, जीपिल, ये एक तरीके से मेरा काफी पसंदीदा स्टॉक है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी नाइस फंडामेंटल्स इन द मेटल्स एंड स्टील साइड। तो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पे दीज लेवल्स। देन मेजरली यहाँ पे 200 एमएस से इसने रिवर्सल दिया है। पिछली बार थोड़ा डिप लेकर के दिया था, इस बार टच करके रिवर्सल दिया है, तो काफी स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। एज अ रिवर्सल केस आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कीपिंग स्टॉप लॉस अराउंड द 200 एमए लाइन। एप्कोटेक्स इंडिया इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको फ्लैग स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। आप ठीक से देखेंगे तो काफी अच्छी मूव यहाँ पे आई हुई थी, और इस मूव के बाद एक डाउनवर्ड्स चैनल बना, और ये पेनेंट स्ट्रक्चर सा मैं नहीं कहूँगा, फिर भी एक फ्लैग सा था जिसको इसने ब्रेकआउट दे करके, बेसिकली ये जो ट्रेंड बना था डाउनवर्ड्स का, उस चैनल को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ गया है। कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इस स्टोरी को आप ट्रैक कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस एट द बेस। तो रिसेंट कलेक्शन ऑफ कैंडल्स जहाँ पे हुआ है, उसके लो को अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं अराउंड 525, it makes sense that if you want you can track it further। टाइम टेक्नोक्लास्ट एक स्टॉक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल वीकली लेवल पे ये बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर बना रहा है। वीकली लेवल पे आप देखेंगे तो इसका कंसोलिडेशन बहुत अच्छा बना है, और ये ब्रेकआउट जो आया है ये कप एंड पैन ब्रेकआउट जैसा है। और उस समय जब हमारी बात हुई तो ये 102 103 चल रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इसने इस हफ्ते जो फॉल आई थी उसने ब्रेकआउट लेवल्स को रीटेस्ट किया है, और उन रीटेस्ट के बाद फिर ऊपर की तरफ निकल पड़ा है। तो ये अच्छा सा कल और आज के दिन में इसने यहाँ से रिवर्सल लिया है, एक हैमर कैंडल बना दी है ऑन द वीकली साइड। तो अगर आप इस स्टॉक में थे तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर आप इसमें नए हैं तो नया पोजीशंस के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट रिवर्सल फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल हुआ है। तो 88 का स्टॉप लॉस लेकर के इफ यू वांट टू प्ले इट फर्दर, दिस ऑल्सो मेक्स अ वेरी गुड केस। इसके फंडामेंटल्स भी मैंने मेरे वीडियो में डिस्कस किए थे, काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। फिलाटेक्स इज अ वेरी एक्साइटिंग स्टॉक ऑन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें भी आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स के बारे में एक क्विक व्यू देता हूँ आपको। अच्छे हैं, लेकिन नंबर्स को देख लेना बेटर है रादर देन हैविंग अ बायस व्यू। गिव मी अ मिनट। तो फिलाटेक्स इंडिया, इसमें बड़ी मूव आई है 13% की, लेकिन आरओसी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 22%, आरओई 24 है, प्रमोटर होल्डिंग 65 है, डेट बिलो, डेट टू इक्विटी बिलो 1 है, तो अंडर कंट्रोल है। क्यू ऑन क्यू ईपीएस ग्रोथ और वाई ओ वाई ईपीएस ग्रोथ दोनों अच्छे चल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ 399%, सेल्स ग्रोथ 75, तो सॉलिड है। वो आप फंडामेंटली आप देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर मैं इसमें 200 एमए ड्रॉ करता हूँ तो देखते हैं ये सेटअप आपको दिखाएगा कि 200 एमए से इसने रिवर्स किया है। एक बार पहले भी लिया था, उसी लेवल के पास आकर के फिर रिवर्स किया है। इस स्टॉक को भी आप अच्छे तगड़े स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रैक कर सकते हो, मैं इसको 105 तक का अराउंड 10% तक का स्टॉप लॉस रख करके आप इसमें सोच सकते हैं आगे कुछ आपको करना है तो। फिर अब आते हैं फैन स्टॉक्स के ऊपर। तो मैंने आज कहा था ट्विटर पे कि
अगर आपको इंटरेस्ट है किसी स्टॉक के बारे में मेरे व्यूज़ जानने हैं तो कल का जो वीडियो था हमारे स्टॉक स्पीक का उसमें कमेंट करिएगा। तो काफ़ी लोगों ने इस पे कमेंट किया है तो लेट्स स्टार्ट विद दोस्त। तो मेनली आईबी रियल, लेट्स स्टार्ट। ये अरुल जी का क्वेश्चन है आईबी रियल। तो आईबी रियल के बारे में एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टोरी। इसको एम्बेसी ग्रुप ने लिया है करके काफ़ी पॉजिटिविटी लोग बता रहे थे। एक तरीके से एक ये स्पेशल सिचुएशन भी हो गई थी और लोग काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन स्टॉक जो आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली नीचे 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 आ रहा है। आपको अगर यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट नहीं दिखता है तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे 5 इयर्स वीकली, तो बहुत ही टफ सिचुएशन है। बट एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि जहाँ पे आज इसने रिवर्सल लिया है वो खुद एक अच्छा सा, इसको हम कहते हैं जेसी लिवरपूल की आप बुक पढ़ेंगे, जेसी लिवरपूल की, उसमें ये पिवट लाइन कहते हैं, जहाँ से पहले रेजिस्टेंस बने थे वहीं से आगे जा करके सपोर्ट्स बनते हैं। और पहले दो सपोर्ट्स बाउंस हुए थे इन्हीं लेवल्स पे। तो बेटर है अगर इस स्टॉक को आप होल्ड कर रहे हैं तो वीकली लेवल पे ट्रैक करिए। और इस हफ्ते की क्लोज अगर 75.7 के ऊपर होती है या 75 रुपए के ऊपर होती है तो इसी को स्टॉप लॉस पकड़ करके आगे चलिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और इतना सहन कर चुके हैं और होल्ड कर सकते हैं तो अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका होगा 50 रुपया, जो यहाँ से काफी नीचे है, अराउंड 33% नीचे है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना और मनी वेस्ट करने की रिस्क से बचने के लिए बेस्ट है, अगर इस हफ्ते की क्लोज बाय एनी चांस या किसी भी हफ्ते की क्लोज बाय एनी चांस 75 रुपए से नीचे होती है तो इसमें से निकल जाना बेटर है। जब अच्छे दिन आएंगे तो फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे इसमें से आगे बढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन लेता हूँ आईसीआईएल। आईसीआईएल इज अनदर फंडामेंटली गुड स्टॉक। इनकी जो स्टोरी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, इंडो काउंट काफी अच्छी है। लेकिन बुरा वक्त अभी चल रहा है क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है रिजल्ट्स में वो काफ़ी कुछ खराब हो गया है। और यहाँ पे अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को तो वीकली चार्ट बेसिस पे मैं स्टॉप लॉस आपको 120 का दूंगा। इसके नीचे मुझे नहीं लगता आपने रुकना चाहिए। होप्स हैं कि इस बार भी यहाँ से रिवर्सल आ सकते हैं 142 से। मेरे ख्याल से 140 का स्टॉप लॉस अगर हम 6 मंथ डेली पे दिखे तो आपको 140 की लेवल नज़र आएगी, जहाँ से 140 वीकली बेसिस पे था। तो आई थिंक इस हफ्ते अगर ये स्टॉक आपका 150 के ऊपर क्लोज होता है तो इसको होल्ड करके रखिए। यहाँ से आगे हम बढ़ सकते हैं, या वीकली चार्ट पे आ करके फिर इसकी सपोर्ट्स जो लेवल मैंने आपको कही थी उन पे आप ध्यान दीजिए, जो मेरे ख्याल से आ रही है करीब करीब 140 के करीब। तो 140 के नीचे बाय एनी चांस ये स्टॉक क्लोज होता है वीकली बेसिस तो इसमें से निकल जाइए। Let the business recover and then we can again join the party. Don't put your money to risk. Lakshmi Organic, let's look at Lakshmi Organic, the technical view. Right. तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में टेक्निकल व्यू देखें तो लिस्टिंग विद इन द ईयर की नज़र आती है। और ओवरऑल यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है ऑन द डेली चार्ट पे जाता हूँ, सॉरी, ऑन वीकली चार्ट। लेट मी गो टू द डेली। तो डेली इज गोइंग टफ, यहाँ से रिवर्स लिया है तो शॉर्ट टर्म में 340 इज योर स्टॉप लॉस वेरी क्लियरली। एंड फ्रॉम हियर कीपिंग द स्टॉप लॉस यू कैन राइड इट फर्दर, क्योंकि पिछले 3 दिनों की कैंडल और आज की बुलिश कैंडल ये बता रही है कि इस बॉटम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला रेजिस्टेंस अराउंड आपका एक्सपेक्टेड है 389 390 और फिर 400। So if you're already holding 340 is your stop loss, and rest you can wait till 390 for a reversal or then 400. I don't know your buy price. If you feel that this weight is worthwhile, you can continue to hold it. Otherwise, yes, this is a real fight against the big downtrend. It will take time to recover. Next stock, if I see, is PM. So PM had a good vibes with the launch of Ola and the volume of business that they were claiming they will get from Ola scooters.
the EV ones. So let's look at PM. So PM, if I observe, is running again, giving a good reversal and scaling back. टिपिकली 200 डीएमए के नीचे मैं फ्रेश एंट्री कभी नहीं लेता हूँ। अगर आपकी एंट्री है इस स्टॉक में तो जो अभी का बॉटम बना है अराउंड 815 ऑन डेली बेसिस, कीप इट एज योर स्टॉप लॉस and just take the ride how far you want to go. I don't know your entry levels, but this will be again a slow ride because you are under a tough weather, heavy weather of the 200 MA. So yeah, this will take time to recover. Keep your stop loss around 815. That should be good. First resistance that you will face from here will be around 900 to 925 zone. Next resistance you will face will be around 1014. So I see this is going to take time for a recovery. If you have patience, hold it with the stop loss at 820, 812. But if you are a short-term player, I would always advise never, never, never hold a stock or enter a stock below this 200 MA red line. For sure, that takes your time and sometimes it takes your money also. Rather, most of the time takes your money. Nitin ji, I'll take Intellect Design, GMR Infra. So I'll just take one to make sure that I serve everybody. So let's look at Intellect Design. So Intellect Design is again a fundamentally very good stock. We all know. The problem here is that their business is bit like a cyclical as major order comes in. These are product players. तो सर्विस प्लेयर्स कम है ये, तो प्रोडक्ट जब इनका कहीं पे लॉन्च होता है या कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वहां से इसमें अच्छी मूव आती है. नाउ इट इज अगेन अ टफ केस. द रीसेंट बॉटम 571 should be your stop loss. I think that this might not face resistance because CNX IT खुद uptrend में आता हुआ दिख रहा है. तो होल्ड करिए till you get your price, but resistances are expected at this line 712 because of naturally being the 200 MA and upwards at around 791. But finally, I would think that below 565, 569, do not hold it. There is a better to leave this stock and free up your cash and get into something which is moving in positive direction. Reddington India, let's look at Reddington India. This is again a stock which has been giving a lot of breakouts, but the breakouts have not been trending and finally it has broken down. So this is a stock where you can keep bottom around 125 and take it further. Your main resistance zone, as I have always been sharing, is focus at the cluster of candle formation. So this means that from I think 146 to 150 tough resistance zone. After 151 you can get some moves. Again, a big request, never hold a stock or enter a stock afresh below 200 MA. ये पेन लेना छोड़ दीजिए मार्केट में. ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है क्योंकि ये पेन पैसा भी ले लेता है, वक्त भी ले लेता है और आप देखते हो मार्केट में दूसरे स्टॉक दौड़ रहे हैं और हम उस पर पैसा लगा ही नहीं पाते बिकॉज हम ऑलरेडी नीचे गिरते हुए स्टॉक में बैठे हुए हैं. So yeah, hard luck. 125 is where you will have your final line of defense and better luck if it reaches your price. Look at the structures always or exit safely wherever you can. Fundamentals look good, but that is how the story has been here. But trend is not coming, so it is not there. So let's look at SCI. This is Shipping Corporation of India. Now, that's another thing I wanted to share with you is that I am somebody who avoids PSUs a lot because PSUs में major problem है management are not aggressive and they do not really focus much on growth. जितना लगता है काफी कुछ PSU गवर्नमेंट डेकोरेट करती है सेल ऑफ के लिए. तो और अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा निकलता है या तो उसमें FPO ला करके डिस्काउंटेड लेवल पे प्राइस गिरा दी जाती है या दूसरी तरफ डिविडेंड निकलवा करके इनका प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट से बाहर निकल जाता है और ग्रोथ करने का एग्रेसिवनेस इनमें नहीं है. तो शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया बिलो 200 MA डेफिनेटली my low point will be the March low of 104 and from here reversal is seen coming but big resistance ahead at 124 and 135. So yep, I am still going to repeat below 200 MA. Don't hold a stock, don't
enter a stock. ये पेन मार्केट का जोन आप अवॉइड कर दीजिए. You really find that life in market is easy क्योंकि as I told you, every time whenever upswing comes, there are some different sectors, different stocks which are running, and you cannot participate if you are busy holding the old losers. Let's go to next stock, persistent system. This gave a good money in the IT rally that happened, a very solid trender, and proud to say this is a Pune based company. So let's look at persistent. Yep, below 200 MA. But here, as I told you, IT sector is expecting to give a trend reversal. So keeping stop loss at 3600, go ahead and attempt here. Most probably, we will be able to cross this 200 MA. I think the next resistance you will face would be around 4000 round figure resistance. From there, yeah, this will uptrend. Fundamentally good stock. Keep stop loss 3600 and next resistance 4000. After that, this looks like it will give you a, yeah, this is one thing that you can again observe. As steady is the unilateral is the up move, that much sharp is the down move. Literally no consolidation, so nobody there to support. The fall is straight. Yep, but anyway, 4000 is your immediate resistance. Next resistance would be 4500, and then you can attempt the blue sky zone. Stop loss 3600 is what I see over here. One more request, repeating below 200 MA, don't hold, don't enter a stock to avoid such kind of a situation. Okay. Let's look at the further update required. Wellspun India, I'll just take. Again, textile based company, Wellspun, good products, good management and balance sheet. Let's look at Wellspun India. Oh, tough fall. You can again study here the impact of crossing this red line. Big fall. This is looking tough. I would not say anybody to stay in this stock. Let's move to the long term picture, how it looks on the weekly to get some support if we are having any. See, yeah, luckily you are at the point where there is a consolidation zone standing here. So all in all, a breakout level breached and reversed. 60 I would keep as your stop loss. You are at 68 today. 60 as your stop loss. Hope and pray that you get your price back. But yep, being on the side of repeating again, observe, observe, and observe the play of 200 MA, how sharp the fall is. Let me look at the results. I see there might be something negative. Let's look at it. Wellspun India. Yeah, there is a quarterly EPS drops, that is. So ये quarter to quarter इनका performance suffer हुआ है. Promoter holding healthy, debt to equity healthy, ROC safe, but big problem is the quarterly drop. You can see there is a steady drop in EPS. So if the company is not performing, drop in margin is the big pain. यहाँ पे आपको you can figure out where the problem is coming. So fundamentally gone, and yeah, that is where I would suggest time to exit. If you're a long-term player, I told you 60 is your stop loss based on the weekly charts and hope for a reversal from here. Right. Next one, I will just pick the single one over here. My favorite, none of the stocks are my favorite, by the way. Adani Wilmar, yes, I did tweet about this. For Adani Wilmar, 600 was the level which I was watching, and yes, it did cross it and cross above and closed above it with a circuit. Now, where does this 600 number coming from? You can always observe the play of cluster of candles. Last time, this was the levels where the struggle happened and just extended. This time also the struggle has happened there. So that is the magic 600 number. So if it moves up, I believe it would, because FMCG, as I told you, is showing an up move. Chances of coming in positive momentum are there, and being from Adani Group, it has those legs which will make it run. Let's look at
the interesting part which I have been sharing with you recently. The promoter holding 87%. Let's go to the investors. How much is left with the public is 9.6764%. So this is what is a big reason why you get that spike and that momentum in these stocks by Adani compared to all other Adani stocks. Safer P by E, though it is high, it is comparatively better, whatever you can think within the Adani group. And P by E within the peers is still quite high. So if you are a good player who can take on the risk and can take care of the momentum either ways the Adani stocks give, go for it above 600. That was today's close. You can plan for something. Keep a stop loss looking at currently short-term player 550, a bit mid-term player at 400. If you can play with another 33% drop over a long term also, you can hold it. Otherwise, keep 550 as your stop loss. Sarda Energy was the other one which we got. Sorry guys, this is getting bit lengthier, but yeah, since I wanted to cover all the folks who have responded to this video, here you have, this is another learning, a cluster of candles from where the earlier reversal happened. Same is the point where we have reversed. So 900 is your stop loss. Hope for a positive move. Fundamentally, I think this stock is still running safe. When I had checked it last time, the best thing I was observing was its PE. So it still remains below 5. Checking it onto the historical PE, it is below the median. So you have a performance where EPS has been also growing as it is from the metal sector. So it does help them. ROC is safe, P is cheap, promoter holding 72%, growth is in place. Q on Q, there is a trap. Let's look at Q and Q. What is the problem? So Q on Q, if I observe, December quarter was an underperformance. But in a way, September quarter had an other income, which resulted in this spike in EPS. So pure play operationally, you see, I think that is the only thing I observe. Operationally, it looks is running in line, except for the sudden other income contribution in September. So look steady. You can think about holding 900 accountable and enjoying the reversal happening in the metal sector. The last comment which I will take today is Dawat and DFM. So there are still remaining. So let's look at Dawat. LT Foods, as the grain exports heat up globally, we can look at this one. Yes, reversal in front of you exactly from 72.9. Take this 200 MA as your stop loss and look for it. But again, don't expect much big move because this flat 200 MA tells me stock is really going sideways for quite a long time. So as if you don't break 90 at this time, बुक कर लीजिए, प्रॉफिट बाहर आ जाइए. ये स्टॉक आपको सिर्फ घुमाने वाला है, पैसा आपको एक लिमिट के आगे नहीं देने वाला है. Stop loss 72.9. Further moves you can look at those. Next one is DFM Foods. So DFM Foods is, I believe, into contract manufacturing of the FMCG products for the food. Yeah. Marketing package have been given the state offers. Okay, so this is Tracks, Curls, Nutcut, Fits. So all these brands, so they are in the FMCG food. P/buy is missing because of the negative profit growth happening over here. Are they making losses? Let's quickly check. Yep, they are making loss. So beware, the times are tough. The margins have literally vanished. And again, the inflation coming in front of us. This stock is in trouble and the chart tells you so. Whole journey is happening below the 200 MA. So big request, guys, never play with stocks below 200 MA and definitely at least check the basics in the fundamentals of the stock, profit growth, EPS growth. These should not be negative. It should be at least positive. Debt is safe. Promoter holding gives you hope. ROC gives you hope, but the recent performance is showing things are deteriorating. So keeping these
updates in view, do keep a watch on my Twitter handle for upcoming programs. And as we have picked up 3 stocks today in today's reversal, so if you are guys who are looking for daily updates in terms of which stocks I am picking, do join my daily update program. I'll share its link. It is hosted on Qhu, and it has flexibility to subscribe on monthly basis, quarterly basis, half yearly and yearly. So if you want to experiment, try it out, and then want to extend, it is all up to you. Or if you are having confidence on my play, go ahead with the annual one. I wish you great prosperity. Thank you very much for watching the today's program, and let's connect soon, and hoping for another positive day tomorrow. Take care.